Hello, everybody. Very good evening. Namaskar and adab. This evening we talk about struggle, जद्दोजहद, लड़ाई. Now लड़ाई struggle किसके लाइफ में नहीं होता है? सभी के लाइफ में होता है. फिल्म एक्टर्स के भी और नॉन फिल्म लोगों के भी. Let's talk about the film actors first. Now there are several actors who had faced a lot of lows before achieving their stardom or superstardom. We can't talk about everybody. We'll talk about a few who really stand out. Mr. Amitabh Bachchan. He had faced a lot of lows, many flops before Zanjeer happened to him, followed by Diwar and Sholay. Mr. Shah Rukh Khan, who had come to Bombay from Delhi with 1500 रुपया with 1500 rupees, वो रेलवे प्लेटफॉर्म में सोया करते थे. उन्होंने कहा प्रेस को कि उनको गरीबी से बहुत डर लगता है बिकॉज इन इज ग्रोइंग अप ईयर्स ही हैड सीन अ लॉट ऑफ पॉवर्टी. और जब भी वो अपना मुफलिसी के दिन याद करते हैं वो डर जाते हैं. एंड दैट प्रोपेल्स हिम, gives him a lot of encouragement to work harder in life. Mr. Shivaji Rao Gaikwad, जिन्हें हम रजनीकांत के नाम से जानते हैं. He was a part of the Bangalore Transport Service. He used to work there as a bus conductor. And look what he's achieved today after his struggle. Rekha ji, she was completely rejected by filmmakers because of her face, her complexion, her figure. She worked on herself and now she's the eternal diva of our industry. Along with these actors, there are some actors जिनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है because people think it's nepotism and all. Mr. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor came with a big film like Savarya, but critics and the media, they wrote him off. They ripped him apart. And Ranbir constantly had to prove himself with films like Rajniti, Barfi, and the more recent Sanju. Along with these film actors, there are musicians, there are singers, there are film directors who've also struggled. अब आते हैं नॉर्मल कॉमन मैन के ज़िंदगी में. कॉमन मैन का स्ट्रगल, कॉमन मैन का लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ नेवर एंडिंग स्ट्रगल, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी CMIE, उन्होंने ये कहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोविड-19 एंड नेशनल लॉकडाउन there has been job losses of around 27 million Indians. Can you imagine? 27 million Indians in the age group of between 20 and 30. Now the urban India unemployment scenario is going to go from bad to worse. Young Indians, they are losing jobs, giving minimal notice. They are given minimal notice and they are losing their jobs. There are some sectors, there are few sectors who haven't yet experienced the trauma. They are yet to experience it. And people are saying that the two most safe zones are the banking zone and the finance zone. Now, कोई भी कंट्री में या दुनिया में जब कोई इस तरीके से क्राइसिस आता है, सो वो क्राइसिस चले जाने के बाद भी बहुत साल लग जाते हैं for the employment scene to become okay. It's going to take years of consistent economic growth for the employment scenario to come back to normalcy the way it was in January 2020. The consumer scenario is equally scary. हम और आप जब आजकल मार्केट जाते हैं ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं बिकॉज हमारे पास पैसा ही नहीं है. सो जब कंज्यूमर कम चीज़ें खरीदेंगे एंड व्हेन they'll hesitate to spend a lot of money, obviously चीज़ों का डिमांड कम होते जाएगा. As a result of less demand, there'll be less production. With less production, there'll be less need for services और इसकी वजह से jobs चले जाएंगे. Now the corporate houses, big companies, it's not mandatory for them to give us jobs. Just get it straight. Because they'll also adopt new technologies like automation, outsourcing. Their mantra is going to be more for less. But we need to upgrade ourselves always, to sell ourselves, to be well equipped and sell ourselves in this competitive market. Mind you, every year, a few million students become graduates. They come with a degree and they enter the job scenario. Unless you're amongst the top 1%, hear it very properly, unless you are amongst the top 1% coming from a super college, a reputed college, your academic qualification or your academic background is not going to help you stand out. Other than your skills, other than your certificate, you need to have an X factor. You need to have values and you need to have determination. वही डिटर्मिनेशन आपको चाहिए जो आपके अंदर था जब आप अपना करियर चूज़ किए थे. It's good that you chose your own career. People should choose their own career and profession. They should not let anybody else choose.
क्योंकि करियर प्रोफेशन ऐसा होता है जिसके साथ आपको पूरा ज़िंदगी लिव करना होता है, सो यू नीड टू लव इट। आप एक भी कामयाब इंसान दिखा दीजिए जो कि कामयाब है एंड ही डजंट लव हिज प्रोफेशन, कैन नॉट बी। So coming back to determination, you need to have the same kind of determination when you had chosen your career. This determination is needed now. इस मुसीबत के टाइम में, कोविड के टाइम में आपको ये सोचना होगा कि सब ठीक हो जाएगा in times to come. I need to say something to the school students also. They're going through a lot of lockdown anxiety. They're very frustrated at home, but take it easy. Get a pet home, learn to play a new musical instrument, read a lot of books, watch good movies. With advanced technology, you can be in touch with your friends, obviously. Enjoy your online classes, your virtual classes. I believe the teachers are making these classes a lot of fun. They bring in a lot of humor. I know all these cannot give you the environment of a school, the motivation that you get in a school, the intellectual boost that you get in a school. It's not possible here. But सब्र से काम लेना होगा। There'll be a time when you'll go back to school. आप लोग स्कूल वापस जाएंगे, आप लोग स्कूल के मैदान में लंच टाइम में खेलेंगे, आप लोग लंच टाइम में एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करेंगे, वो सब दिन आएगा। ओके, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। जब हम लोग कोई चीज़ तीखा खा लेते हैं या कोई तीता चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद जब मीठा खाते हैं कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। सो good times are going to come. With so much of negativity around, there's some positive things also which people are hearing. I read in a newspaper some 2-3 weeks back that kuch employers, kuch big companies, they're ready to give jobs to around 2 lakh people in India. These companies have advertised. The companies are Google, Flipkart, Byju's, Deloitte, Tech Mahindra, etc. A few other companies too. Now, 80,000 out of these 2 lakh jobs that are going to come up, they are meant for fresh graduates. That's a very good thing. Now, I know there's immense pressure. There's immense pressure on small-time businessmen in large corporate houses, individual employees as a result of this COVID-19. But you need to be very patient. कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप लोग जो काम करते आए हुए हैं उसको छोड़ दीजिए और कुछ और कीजिए जिसमें से पैसा आएगा। येस, यू कैन डू समथिंग सो दैट सम इजी मनी कम्स इन, बट जो काम आप सालों से करते आए हैं उसको मत छोड़िए, बिकॉज वही काम आप प्यार से बहुत लगन से शुरू किए थे, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई सर्विस हो। सो डोंट लीव दैट, डोंट क्विट दैट, बी एट इट। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, डू इट। मगर जो काम आपको अपना वजूद दिया था, आपको अपना आइडेंटिटी दिया था, उसको मत छोड़िए। द गवर्नमेंट, हमारे सरकार कुछ महीने पहले ही दे हैड अनाउंस्ड दैट थ्रू MSME दे आर गोइंग टू गिव लोन्स टू बिजनेसमैन विच हैजंट मटीरियलाइज्ड। लेट्स वेट फॉर दैट। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब मुसीबत आते हैं, जब बहुत ख़राब दिन आते हैं, तो जो दबंग होते हैं वो और भी दबंग बन जाते हैं to face the musibat. So please do not sink into depression, refusing to acknowledge the negativity of COVID-19. At this moment we need a lot of grit and determination. बहुत डर पैदा हुआ है हमारे अंदर. That fear can only go with a lot of courage. That has to come from within. कमीज़ फटा हुआ है, ओके, फटा कमीज़ पहन के घूम रहे हैं, सो क्या हुआ? थोड़ा सा रफू कर लीजिए, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। ज़िंदगी ही तो है, इट्स लाइफ आफ्टर ऑल। बाय, लव यू, टेक केयर।